ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन शुरू करते हैं जी। वेलकम ऑल ऑफ यू टू DP 100 डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेटा साइंस सॉल्यूशन ऑन Azure। और जैसे आप लोग सब जानते हैं, ये कोर्स इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन डाइस एनालिटिक्स, 360 टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर and and funded by the Ministry of IT। कोर्स के अंदर हम लोग मुख्तलिफ मटेरियल वगैरह कवर कर रहे हैं कंसर्न विद डिज़ाइनिंग डेटा साइंस सॉल्यूशंस ऑन Azure। और बिफोर वी जंप इनटू द कोर्स कंटेंट एंड द कोर्स सिलेबस, और उस चीज़ के अंदर जंप करने से पहले लेट्स टेक सम टाइम टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। तो I am Waleed Ahmed, मैं आपका लीड इंस्ट्रक्टर हूँ। I have years of experience in the data science and machine learning field, और I have experience in the major 3 cloud provider settings। GCP में काम किया हुआ है, AWS में काम किया हुआ है, Azure में काम किया हुआ है, specifically in the data science domain, और data science और big data के solutions को develop करने में I have hands-on experience with multiple clients। Ali, I'll let you introduce yourself। Hello, मेरा नाम मोहम्मद अली है और I'm a AWS Certified Solutions Architect Associate और I aspire to help enterprises in their digital transformation। जो वो अपने on premises से जब वो cloud पे migrate कर रहे होते हैं, तो I design for them a scalable, cost-effective, secure and reliable cloud infrastructures। और मुझे भी data science को परस्यू करने का एक बहुत शौक है, और जहाँ जहाँ हम लोग क्लाउड से रिलेटेड हैं वहाँ पे हम लोग डेटा साइंस को भी अपने साथ साथ लिए हुए चल रहे हैं। थैंक यू, मेरा बस इतना ही था। Right. Before we start with the course, maybe I think it's good to have a brief introduction of the class participants as well, so that everyone knows कि लोग diverse किस्म के background से आ रहे हैं। In this course we have students joining us. In this course we also have working professionals from both the public and private sectors। तो डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस के लोग मौजूद हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के लोग मौजूद हैं, और हमने सबको साथ लेके चलना है। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक इट्स बेटर नॉट जस्ट फ्रॉम getting to knowing each other perspective, but also from the class understanding perspective। So Ali, perhaps you can call out the class names one by one, and people can introduce themselves। Sure. The first name who's going to introduce himself is Mujahid Khan। जब भी मैं आपका नाम लूँ, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और वन लाइनर में अपना नाम बताएं और आप कहाँ पे काम करते हैं, कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर में, और फिर आप म्यूट कर लें। जी मुजाहिद। Assalamu alaikum. My name is Mujahid Khan। I have done my master in MS in computer science, and currently I am working in establishment department of KPK as an assistant director IT। Good to hear you, Mujahid Khan। Welcome to the class, Asadullah। अच्छा, यार मेरा नाम असद है। मैं बेसिकली पिछले 6 साल से तकरीबन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। सॉफ्टटेक वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है, वहाँ में तकरीबन 4-5 साल से पिछले काम कर रहा हूँ। हम बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, वहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर में काम कर रहा हूँ डिफरेंट एरियाज में, डेवलपमेंट वीडियो स्ट्रीमिंग एंड एजर के ऊपर हम कुछ काम करते हैं, वहाँ भी मैं इन्वॉल्व हूँ। दैट इज ऑल। ठीक है सर, थैंक यू। फवाद फरीद। फवाद, आप हैं कॉल में?
Moving to the next, Numan Mirza. Assalamu alaikum, all of you. My name is Nawan Mirza, and currently I'm working in one of the leading banks in Pakistan. And before that, I was working with IBM Pakistan and Inbox, and I have international experience well of, and I work as a software consultant, and I am associated with the data science and machine learning since last, I believe, 3.5 years. And Okay. I also work on machine learning and data visualization and Tableau as well. Okay. So here I am just for EP 100, and I wanted to sharp my skill on Microsoft Azure Machine Learning Studio, and how we can use and implement algorithms, machine learning, definitely algorithm, by using drag and drop options. So how they will govern, how they will react, and these are the stuff where which I wanted to learn and know from this class, and expecting that our main focus will be Microsoft machine learning ठीक है. studio as well. Yeah, sure, please go ahead. Just, welcome Numan. I hope by the end of this course you are able to implement all the algorithms you wish on Azure Thank you so using much. the drag and drop. Thank you. Mohammed Zubair, please introduce yourself. Mohammed Zubair. Okay. Abdul Wakil. Hello everyone, my name is Abdul Wakil. I have done my PhD in electrical engineering and I'm working as an assistant professor in NUST. Okay. और ठीक है. उसके बाद है अफशा बिलाल. Afshan, please introduce yourself. Ji, Assalamu alaikum. I'm Afshan Bilal. I'm from public sector organization. I'm working as a deputy manager IT, and my main focus is programming, mostly is PL SQL programming. And I have around 10-year experience of working on Oracle and its related components. Okay, Thank you. Perhaps while introducing yourselves, students, if you can tell us a little bit about what you're looking to get out of this course. Is it implementing a data science solution practically? Is it using the drag and drop functionality? Is it productionizing your existing machine learning models, or is it just to get another certification under your belt? So. The next one is Amir Yassin. Amir Yassin, could you please introduce yourself? Assalamu alaikum. My name is Amir Yassin, and I have done my master's in information technology from Urdu University, and now I am working as a IT support officer in National Savings Center Sahiwal. Okay, Amir. Thank you for introduction. Welcome to the class. उसके बाद हैं Anushya Minahil. Anushya, could you please introduce yourself? Okay, moving on to Asadullah. You guys मैं can बता hear me, चुका right? हूँ जी, मैं बता चुका हूँ. अगर असदुल्ला सिर्फ एक ही है यहाँ पे. Okay. Ayaz Alvi. Welcome, Ayaz. And I'm having almost nine years experience in IT domain, and I'm currently working in government holdings as a senior system engineer. And, Sorry, but can you speak up, please, Ayaz? आपकी आवाज काफी कम आ रही है. Hello, can you hear me? जी जी जी. Okay. आपका 9 साल का एक्सपीरियंस है और? Yes, and
I'm currently working in Government Holdings. It's an oil and gas company. Oh, nice. I'm working as a senior system engineer, and basically my domain is IT infrastructure Okay. and support plus V.R.U. And I'm taking this course uh, just to have a knowledge related to a data science. ठीक है, ठीक है, yes, thank you. Welcome to the class. Fahad Ali. Fahad Ali, can you hear me? Mr. Wasim. Okay, Mohsin Munawar. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, Mohsin. I'm Muslim Nawar, currently working in NESCOM, and I'm planning to implement some data science solutions on big data for our department. Okay, welcome to the class. Salmanullah Beg. हेलो Sarmad अस्सलाम Javed. वालेकुम। Walaikum Assalam, Salman. जी. अच्छा मैंने करंटली कॉमसेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बैचलर में कंप्यूटर साइंस में। तो ठीक है, रिसेंटली मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, इस कोर्स के लिए मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कोर्स में मतलब हिस्सा लिया है। ठीक है, सलमान. थैंक यू। Welcome to the class. Taimur Iftikhar. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. जी तैमूर. I'm Taimur Iftikhar. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. Currently I am working as a data analyst in S3 Bank. ठीक है, और आप इस कोर्स से क्या सीखने के लिए आए हैं? क्योंकि हमारे जैसे डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अभी भी हम ऑन प्रेमिसेस पे यूज़ करें, ठीक है, तो क्लाउड पे ये कितना हेल्पफुल है, तो जब तक मुझे आइडिया नहीं होगा तो मैं अपने मैनेजमेंट को नहीं बता सकूंगा इसके. तो इससे यही है कि जितना मुझे इससे नॉलेज हो सके और किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है तैमूर, थैंक यू सो मच. और सरमद जावेद. तैमूर अस्सलाम अली. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरमद जी. आई एम सरमद जावेद, मैं क्वेटा से हूँ और करंटली मैं क्वेटा सेरीना होटल में एज एन आईटी ऑफिसर काम कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू. थैंक यू. तैमूर अली. My name is Samuel. I have been working right now as a database administrator in a private company, and Okay. I have MScs in computer science from Computer Lahore. Okay. So, what is my basically I have a big of data science where I have been getting trained from a local institute. Basically, I want to learn something like that. My question throughout the course was like how outliers, when we dismiss or we exclude outliers, then how can we maintain the scope of our research? I mean, outliers को निकाल देने से हम कैसे ठीक है, अपना टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं, या कैसे स्कोप जो है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा. इस चीज में मुझे बड़ा अभी तक कंफ्यूजन है डाटा साइंस में. ठीक है. आई होप आपकी बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स ये कंफ्यूजन दूर हो जाए. और थैंक यू. वेलकम टू द कोर्स. और शेख मोहम्मद मुनीर. Yeah, my name is Sheikh Munir and I have 6+ years of experience in databases, and currently Okay. I am as a DBA in Azure, Pakistan, and Okay. I have also done certified data analyst program from Karachi.ai. Okay. And want to get to know about cloud technologies. ठीक है मोहम्मद मुनीर. वेलकम टू द क्लास. उनसा इब्रार. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. My name is Unsa Ibrar and basically मैं कोयटा से belong करती हूँ and I just done my bachelor's in telecommunication engineering from BUTMS. मैं अपने graduation के बाद मैंने TZM में CR डिपार्टमेंट में जॉब की थी और currently मैं एज एन फ्रीलांसर काम कर रही हूँ.
ठीक हो गया। और basically इस कोर्स से मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द सर्टिफिकेट, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द मशीन लर्निंग एज वेल। बहुत हम लोग आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए रेडी करेंगे, हम लोग आपको प्रॉपरली हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों के गोल्स पूरे हों इस कोर्स से और आप लोगों का वक्त ना ज़ाया हो। वेलकम टू द क्लास। उस्मान फाखिर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक recent graduate हूँ from NUST. From this course, I'm just expecting to know as much as possible about machine learning, get an idea, and to figure out कि असल में domain wise कैसे implement किए जाते हैं systems. ठीक है, वेलकम टू द क्लास। वाजिद नईम मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वाजिद नईम मलिक है। मैंने BS ऑनर्स किया और मैं भी करंटली नैपटेक नेशनल एजुकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में IT असिस्टेंट जॉब कर रहा हूँ। ठीक इस है, कोर्स में लेने का मेरा मकसद ये था कि एक Azure क्लाउड बेस्ड को समझा जाए और डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में एक्सपीरियंस। ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद तैयब। Assalamualaikum everyone. My name is Mohammed Tayyab and I was graduated back in 2018 from FC, and currently I am working as a data scientist, and I believe by the end of this certification by this course, I will be able to have quite knowledge about the automation things based on Azure, and on the other hand definitely for the design and implementation thing. ठीक है, वेलकम तैमूर। सॉरी तैयब। वेलकम टू द कोर्स। ज़ुहैब हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ुहैब। मेरा नाम ज़ुहैब हसन है और मैंने 2017 में 15 से 17 मैंने M.Com IT किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 18 से 20 के बैच में मैं MPhil TQM मेरा फाइनल सेमेस्टर है। ठीक है। और रिसेंटली मैं असिस्टेंट मैनेजर एडमिन उमर स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ड्राइवन में। ठीक है। तो मैं ये नॉलेज लेना चाह रहा हूँ इस सर्टिफिकेशन से, क्योंकि मैंने मशीन लर्निंग का तो बहुत सुना था और साथ में एक दो मैंने कोर्सेज भी ऑनलाइन अटेंड किए थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब कुछ मजीद सीखूं इसमें। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग सिखाते हैं आपको। थैंक यू ज़ुहैब। थैंक यू सर। फैसल शफीक, आपने ऑडियो नहीं ऑन की भी। ठीक है, इसके अलावा कौन रह गए? तबस्सुम मुनीर, आपका हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम तबस्सुम मुनीर। मैंने बैचलर्स इन IT किया था सरगोदा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये 5 साल हो गए मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं पंजाब IT बोर्ड में एज ए रेजिडेंट इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा सा आइडिया है AWS पे, लेकिन डेटा साइंस क्योंकि इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट इस वजह से ज़्यादा आ रहा था, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस इन कमिंग ईयर्स एक्सपेक्टेड के यही है कि ये बहुत ज़्यादा इन होंगे मार्केट में, तो इस वजह से अपने एक्सपर्टीज को थोड़ा इनहेंस करने के लिए मैं इस चीज़ में आया। बिल्कुल जी, ये परफेक्ट टाइम है इस फील्ड के लिए। थैंक यू, वेलकम टू द क्लास। नजिया एहसन। फवाद फरीद। ठीक है, अब ये होगा इस तरह कि वलीद ये लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। Assalamualaikum, Ali Kamar here. I think that you forgot to name me. जी जी जी। Yeah, my name is Muhammad Kamar Shahzad, and I have done graduation in computer science, and I have around 14 years of experience in software development. Okay. Currently, I'm working with the Fusion of Technology, and past I worked with Naxol and System Limited, both of the big companies in Pakistan. And my interest about this course is to definitely get another certification to add into my portfolio. But I wanted to learn how to become a data scientist and how I can grow my skill set in this field. Thank you very much. Thank you, Kamal. Thank you. Shah Faisal, sir. जी जी. I'm working in a financial institute as a head of IT operations. Okay. And I've been working in IT for more than 10 years.
and I have a local and international experience and deputed on different designation like business analyst, project manager. So there are two purposes of joining this course. One is the certification. Second is, as you are aware, this is a data science a revolutionary world, and I want to learn this thing that how to equip with the forthcoming technology. I mean, objectives that so that we can at least, be prepared and even make the changes in our company to get the desired objectives as set by the company through this technology. What facilitation is provided through this technology? So it's an honor for me that I'm with this team. I'm thankful to all of you. थैंक यू आप सबने हमें ज्वाइन किया इस कोर्स के लिए और हम लोग पूरी उम्मीद है कि हम लोग आप लोगों की ये गोल्स वगैरह अचीव करने में अपनी कंपनीज में चेंज लेके आने में और अपने आप को भी इम्प्रूव करने में इस सर्टिफिकेशन को हासिल करने में हम लोग आपकी मदद करेंगे अगर अभी भी कोई और रह गए जिसने क्योंकि लोग ज्वाइन किए जा रहे हैं साथ साथ तो अगर कोई इंट्रोडक्शन के लिए रह गए तो प्लीज़ ठीक है मेरा नाम फहद रहमान है मैं 5 साल से सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोग मैं मोबाइल ऐप्स पे काम करता हूँ वेब एप्लीकेशन पे काम करता हूँ राइट नाउ हम सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड में एचआर एडब्ल्यूएस इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द डेटा फॉर एआई रिलेटेड टास्क एंड आल्सो फॉर सीआई/सीडी पाइपलाइंस ठीक है ठीक है थैंक यू वेलकम टू द कोर्स अच्छा मेरे ख्याल से हो गए हैं सारे अच्छा हम लोग वालेकुम सलाम जी जी मेरा नाम मुबस्सिर अली है मैंने रिसेंटली बीएस किया है सीएस में और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेज में था और इस वजह से मैं इसमें कर रहा हूँ ठीक हो गया मुदस्सिर थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन और वेलकम टू द क्लास अगर अभी भी किसी का इंट्रोडक्शन रहता है तो प्लीज मेरे ख्याल से हो गए हैं सारे चलें ठीक है Then I guess we can go ahead and start. Now that we're past the introductions, everyone knows that there are people from very diverse backgrounds in this course. There are people who have decades of experience and are looking to get a high level understanding of how to bring changes across their organizations. There are also those of you who are just fresh graduates or even freelancers who are thinking of doing data science at scale, but not necessarily to revolutionize an organization, but to offer your services to the industry. And let's then get started with the day. So today's agenda is we're going to discuss what this course is about and what this course is not about. And then we'll go over some of the fundamentals of cloud, of using Azure cloud per se. Then there are 3 syllabus elements that we would like to get over. There are 3 main concepts to do with data science solutions on Azure that we'd like to get over with today. And by the end of today, you not only be able to know what these things are and what the details of configuration in these things are, but hopefully by the end of today, you would have designed and run and pushed into deployment your first end-to-end data science pipeline using a drag and drop environment. As we've said before, this course will prepare you for the DP100 certification. We're learning to design and implement a data science solution on Azure, and we'll be going over the course material over a span of 3 weeks. And
classes will be conducted on Saturdays and Sundays. And roughly the structure of these sessions would be that at the start of the day, after we've gone over the recap and recapitulated whatever we've learned before, we will then go over the theory concepts as well as the essential concepts needed to be delivered for that day in accordance with the exam syllabus guidelines. Then we'll have a short break before jumping into a practical demo of whatever services are available related to those concepts. And after that, we'll have another longer break for lunch and prayer. And after that, we will have our hands-on lab in which you will be given access to the Azure platform, and given some instructions, you will be able to perform certain tasks and learn how to do each and everything that is needed to build a data science platform, to productionize your models, and to reconfigure and to serve your models in real-time inference pipelines. So before I move any further, I would like to go over the course syllabus as Azure states it. So Azure ने हमारे साथ ये share किया हुआ है a rough guideline of what the course is about. So there are certain skills and there are certain concepts जिनकी basis के ऊपर आपको Azure judge करेगा on whether or not you are capable of designing and implementing a data solution on data science solution on Azure. Or there are certain areas you have to know how to set up a machine learning workspace. उसके अंदर we will go over how to create a workspace, how to handle data in machine learning workspace, और उस data को लेके how to carry out experiment compute context, कैसे आपने अपने compute power set करनी है, कैसे आपने अपने compute target set करने हैं जिसके ऊपर you will not only be conducting training of your models, but you will also be deploying your machine learning models on that. Then 25 to 30% of your exam is based on how to run experiments and train models, because training machine learning models is very important part of data scientist's job. So you will, first of all, you will be learning how to do it using the Azure Machine Learning Designer. Now, Designer is the interface which is that Azure provides, जिसके अंदर आप drag and drop करके अपनी end-to-end machine learning pipelines build कर सकते हैं. And we'll go over the details of that today. You'll be learning how to run training scripts in a workspace, or on training scripts को use करके how to train models and as well as generate performance metrics. Once you have generated performance metrics, you will be able to automate the training process by creating pipelines, by using the data sets and data store functionality, and how to monitor pipeline runs. Then another 20 to 25% of the course is focused on how to optimize and manage models. So model की training initiate कर लेना is one thing, but is it optimized? Is it going to be the best performing model? उस चीज के लिए there are certain features that Azure provides. First of all, there is a very hyped up AutoML feature, जिसके अंदर
you don't have to figure out which kind of machine learning algorithm to use, but instead Azure machine learning figures out for you, okay, which models is it going to use, which combination of models will be used for production and deployment, and which parameter space to search for, and uh, you know, other than that, you will be learning how to use hyperparameter tuning feature, which is called hyperdrive in Azure machine learning. और उसके थ्रू आपने मॉडल्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर आपने सैम्पल स्पेस कैसे सेट करनी है, सर्च स्पेस कैसे सेट करनी है, कौन से मेट्रिक्स को आप मॉनिटर कर रहे होंगे, which will be the metrics on the basis of which your model will be optimized, and how to set early stopping or early termination options to terminate the models that aren't learning so well. And if any of these things that I'm saying right now, you are not able to understand any of these things, then don't worry about it, because we will go over these concepts and we will take questions and answers once we get to the topic. Then we'll be using model explainers to interpret models. So where training and optimizing models is important and is certainly one thing, explainable and interpretable machine learning is also very, very important, especially in certain sensitive domains. Like if you're dealing with financial data, many of you will be from the finance sector, and you would know that you cannot rely on black box, and you will be able to use certain interpreters and see the certain feature importances, how they weigh in on the predictions of your models. Then you will be learning how to manage models. People who are from the software background, who have been into the CI/CD development side, they will be able to understand how important it is to properly version and manage code. तो जैसे कोड को वर्जन और मैनेज करना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमें अपने ट्रेन्ड मॉडल्स को भी मैनेज करना ज़रूरी होता है, और उसकी if we're training different versions of those, some of them might be working, maybe a new version is not working as well as the previous version, so rollback and everything, वो सारी चीज़ें आपने कैसे करनी है, that's what we'll be learning here. Then on the final part of the exam, 20 to 25% of the exam area will be given to how to deploy and consume models. So इस वक्त तक आप लोग ये सीख चुके होंगे कि मॉडल्स ट्रेन कैसे होती हैं, मॉडल्स को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, मॉडल्स को मैनेज कैसे किया जाए, बट देन pushing it to production and deploying the model as a service is also very important. और उसके अंदर there are two main things to go with. The model can either serve as a batch service, batch scoring, जो maybe you will run it overnight, और कोई नया डेटा आता है और उसके ऊपर आप overnight run करते हैं, और फिर अगले दिन you have all the predictions. Or you can also serve it as a real-time inference pipeline, जिसके अंदर as the real-time data is coming in, if a user requests a prediction to be made at 10:51 a.m., then he will be served via a web endpoint at 10:51 a.m. तो उसके लिए आपने compute targets कैसे set करने हैं, आपने मॉडल को as a service deploy कैसे करना है, बैच इन्फ्रेंस और रियल टाइम इन्फ्रेंस की पाइपलाइंस कैसे आपने डेवलप करनी है और प्रोडक्शनाइज करनी है, और डिजाइनर पाइपलाइंस को वेब सर्विसेज के अंदर कैसे पुश करना है,
this all of this is what the exam is about, right? So I still hope कि इस पूरे के पूरे सिलेबस कंटेंट के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो इससे आप लोगों की कोर्स एक्सपेक्टेशंस काफी क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज nowhere in this syllabus I outline does it say कि you have to know how logistic regression models work या how neural networks work या उसके अंदर आपने dropout कैसे implement करना है. So this course is not about machine learning और उसके algorithms आप कैसे implement करेंगे और उसके अंदर क्या complexity होती है. This course is about this course assumes कि आपको machine learning के algorithms और उस space का पहले ही थोड़ा बहुत idea है, but now you want to go one step ahead from prototyping and take your skills to the next level by learning how to productionize it, how to put machine learning into to an area where you can generate value through it by serving it. So yeah. So having said that, having gone over the course content, if I'll quickly go over this, the data science process. So for many of you who are already familiar with... Excuse me, sir, I have a question. Sure. So I'm very glad and very excited about the course, and I just seen the whole course contents, and I'm very glad that you are following Microsoft course contents. But I wanted to highlight one thing over there कि जो एग्जाम्स के अंदर इनको होते हैं ना, वो जो एक पूरी की पूरी वो स्टोरी एक होती है, ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 3 आई बिलीव होते हैं क्वेश्चन, जिनके अंदर वो सिनेरियोज होती हैं और आपने सिनेरियोज को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना था. तो हमारे एक्सरसाइजेस जो है ना, अगर वो सिनेरियो बेस्ड होंगी तो दैट वुड बी आई बिलीव वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर जो है सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम की प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो असाइनमेंट्स होंगे ना, अगर वो इस तरह हो जाए कि कुछ सिनेरियो बेस्ड होंगे तो दैट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. तो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि अगर आप उसको उस लिहाज से बना दें तो वो एक ज्यादा ठीक है. Thank you, Numan. Thank you, Numan. Thank you so I would much. like to request कि जब वलीद इलेक्टेड लेवल कह रहे हो तो काइंडली कोई इंटरप्ट ना करे. अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई भी सजेशन है, तो आप ये ज़ूम की चैट में या फिर व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसकी चैट में आप लिख सकते हैं. थैंक यू. और आपके हम लोग सजेशन सुन लेंगे. प्लीज इंटरप्ट ना कीजिएगा. थैंक यू. If अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है तो like Ali said, you can put it in the chat, and if Ali cannot address it in the chat, then he will find a good time to notify me, and I will personally answer that question, because अगर आप सब there are 42 people in this class, और अगर सब लोग इस तरह से बीच में अनम्यूट करके और क्वेश्चंस से क्लास का टाइम लेना शुरू करते हैं तो वो कलेक्टिवली सबका टाइम जा रहा होगा. Just that. Overall, Numan, I get your point, and I agree. काफी scenario based है, और once we've gone over the concepts, then there will be definitely some discussion and some practice with scenario based thinking, और एग्जाम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है हम उसके ऊपर भी आएंगे. I'm sorry for I'm sorry for the interruption. We will follow the process as you are saying by chatting, but anyhow that you took a small option. I want to raise that you did not mention the this. It seems to me that this is all the standardization of the model. There is no customized. This impression I got from your conversation.
Am I right, sir? It's not just about customization. It's also about training and uh, a few of the basic techniques. Fine. Professor, do you have any further question? Sir, I'm not clear, but please proceed it. I will ask at the end, sir. Sure, sure. Thank you. So जो लोग data science के background से हैं, they will already be familiar with the overall data science process. और उसके अंदर it begins with the data conception. आप data को ingest करते हैं अपने platform के ऊपर, जो भी आपका IT solution चल रहा है. उसके ऊपर आप कुछ preliminary analysis run करते हैं. You explore that data. डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर कुछ आप फीचर्स इंजीनियर करते हैं, कुछ उसके अंदर आप डेटा की स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं. देन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन चेक्स कि कहीं पे आपकी मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, कहीं पे डेटा के अंदर कुछ आउटलायर्स तो नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, रिमूव करना है. देन यू स्प्लिट द डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, and then you pass it to a trainer, which builds a model. और एक बार आप उस मॉडल को का प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, फिर उस मॉडल की वैलिडेशन होती है. then you carry out, once you validated that model, फिर आप उस मॉडल की बड़े स्केल के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं with all of your data, and then you roll out and serve that model uh, as either a batch pipeline or a real time pipeline. और फिर एक बार उसकी डिप्लॉयमेंट भी हो जाती है, तो फिर उसके ऊपर आप उस मॉडल को आप मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं. इसकी कहीं परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं जा रही है, इसके ऊपर कहीं लोड कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर या फिर लोड कहीं बहुत कम तो नहीं है. उस हिसाब से आपने सारी बात अपनी कंप्यूट को स्केल अप या स्केल डाउन करना है. एंड देन यू लॉग इट ऑल. Now, all of this is a very complex process. Uh, many of uh, many of the people who are beginning with data science think of data science as a very simple thing, which is just this part. You get the data, you build a model, and then that's that. एक बार आपका model बन गया तो that's that. Actually, in reality, it's not. It's much more complex than that. आपके पास ये सारे के सारे steps आ रहे हैं, and you have to have a robust way in which to deal with the entire data science process and do it all at scale. So that is exactly where Azure machine learning comes in. और Azure machine learning ना सिर्फ scalable on demand compute आपको provide कर रही है, बल्कि it provides you with a way to store data and to use and reuse it, and then it provides you with a way to completely orchestrate your machine learning workflows. So some of you who are from pure software background, they'll be able to relate with orchestration by using tools like Jenkins. Yeah, if someone has been doing data munging and building data engineering pipelines, they'll be familiar with tools like Apache Airflow or something like that, जिसके थ्रू आप ये डिफाइन करते हैं कि पहले ये स्टेप कर लो, फिर ये स्टेप कर लो, and then you do this. Similarly, with machine learning, we also want to modularize our entire process into little chunks like this, जिसके अंदर हम हर स्टेप को एक अलग मॉड्यूल के अंदर ले जाएं, और फिर इन सारे स्टेप्स को अलग अलग जो कि इंडिविजुअली काफी मैनेजेबल हो जाती हैं, we put that together in a chain, in a pipeline, and then we orchestrate that entire pipeline as a whole. And for that we also need certain tools. और Azure machine learning हमें ये एक रेडीमेड
platform provide करती है in order to do this, and we'll be able to register models and manage our models there. We'll be able to log our metrics and monitor not only the training process but also the models in productions, and be able to deploy those models. So before I jump into the machine learning service ke, concepts, I would revisit some of the cloud fundamentals for those of you who are not not as familiar with the cloud background, and for those of you who are new to cloud. So essentially, there are three types of cloud services out there. There's infrastructure as a service, the IaaS. There's platform as a service, PaaS, and then there's software as a service, which is SaaS. So इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को आप इस तरह समझ लीजिए कि क्लाउड आपको कंप्यूटिंग मशीन्स प्रोवाइड कर रहा है in their in the rawest form possible. They're handling all the hardware, but you have to manage the operating system that goes on top of that hardware, and the development environment जो आप उसके ऊपर सेट करेंगे, जो tools आपने सेट करने हैं वो सारे आप IaaS के अंदर खुद से सेट करेंगे, and you will then, once you've set it up with the correct environment and OS, then you will be setting it up with the correct development environment and start development on top of that. अगर आपने जावा में डेवलपमेंट करनी थी तो आप एक बार उसके ऊपर जावा सेट करते हैं, एंड देन उसके ऊपर आप कोडिंग वगैरह शुरू करते हैं, एंड देन one step further you have to take it to productionization. So IaaS के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कंट्रोल होता है आपकी ओवरऑल एंड टू एंड पाइपलाइन का या एंड टू एंड आपके डेवलपमेंट प्रोसेस का, but it is also the most difficult to use. For some of the examples, Azure EC2 instances provide Azure VMs provide करता है, AWS EC2 instances provide करता है, जो आपके पास raw machines हैं जिनके ऊपर आप खुद से configure कर सकते हैं what OS goes there and what kind of development environment you set it up with. Then coming to PaaS, platform as a service के अंदर you don't have to worry about the operating system that goes there or the development environment. आपको ready-made environment पहले से मिल रही है. If you guys are familiar with Google Colab, आप अगर machine learning के लिए Google Colab को use करते हैं, you will notice once you launch Google Colab या if you launch Azure functions, तो उसके अंदर कोडिंग एनवायरनमेंट आपकी पहले से सेट हुई होती है, पाइथन एनवायरनमेंट आपकी पहले से सेट हुई होती है. इट इज ready in such a state that you can just open it up and begin writing Python code. So you don't have to worry about the nitty-gritty of the configuration and everything. So a little bit of less control in terms of what goes where, but much easier to use. And then on top of those platform as a service offerings, you can build software as a service products, जिनकी कुछ examples हैं Google Translate, Azure Cognitive Services जैसे है, जिसके अंदर you don't even have to code, you have to provide it data and it will give you some sort of output. So much more easier to use than even platform as a service, but then again you have the least amount of control in SaaS kind of services. So Azure machine learning service जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा course based है, that's a platform as a service offering, और इसके अंदर we can quickly set it up with we don't have to worry about the OS and everything, but we can quickly set it up with the right tools. And if you as a data scientist, if you want to work with Python, it will become configured with Python. If you are more at ease working in R,
then it will come with an R environment. There are a few Azure compute services जिनके साथ at least आपको by name familiarity होनी चाहिए, and you should know that what they generally do. So बात करते हैं Azure virtual machines की, जिसके अंदर which is the most basic type of machines out there. जिसके अंदर जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ पिछली स्लाइड के अंदर कि यू कैन सेट इट अप विद व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट. आपने उसके ऊपर विंडोज यूज करनी है, देन यू कैन कॉन्फ़िगर इट विद दैट. इफ यू वांट टू यूज लिनक्स और सम वर्जन ऑफ लिनक्स, वेदर यू वांट टू यूज उबुंटू और सम अदर वर्जन, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं. और एंटायर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करना और उसके ऊपर अपने पूरे सिस्टम को फंक्शनल रखना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वंस यू सेट अप वर्चुअल मशीन्स एनवायरनमेंट, तो उसको आप स्केल कर सकते हैं इनटू मल्टीपल नोड्स बाय यूजिंग स्केल सेट्स. Azure Kubernetes service basically dockerized और containerized applications को scale करने के लिए और productionize करने के लिए. इसके अंदर आप एक अपना Docker image create कर लेते हैं. Docker image is just a very basic version of your code and your dependencies for running that code, जो कि मिनिमल सेटअप के साथ Kubernetes सर्विस के ऊपर चल सकती है. Similarly, Docker services को रन करने के लिए Azure also provides Azure container instances, which is slightly faster to go into production with, but it does not scale as well as Kubernetes service. तो हम इन दोनों के बारे में हम will see it in a couple of slides. Azure Functions serverless compute service provide करता है. इसके लिए you don't have to set up a machine, or without even setting up a machine, there is no server in the background, but Azure provides a way to run your code there. Azure HD Insight is for running your Hadoop clusters. Or similarly, Azure Databricks is also for Hadoop-based, Spark-based analytics jobs, or it's partnered up with Databricks. So those are some of the Azure compute services जिनके साथ कम से कम आपको by name familiarity होनी चाहिए और roughly ये idea होना चाहिए कि what they're about. Azure machine learning service के अंदर जो हमारे लिए relevant हैं, उसके अंदर it is Azure virtual machines, जिसके अंदर हम compute instances set कर सकते हैं, individual instances. And once we get to building large clusters for training, तो Azure virtual machines ही हमारे काम आ रही होती हैं. And similarly for productionizing and for deployment of whatever models we are going to deploy, we will either use Azure Kubernetes service or Azure container instances. So हमारे लिए relevant ये तीन है majorly. HD Insight और Databricks या कोई और भी हमारा compute service हो, externally हम उसको link कर सकते हैं as compute target, but from within Azure machine learning we can use either virtual machines or Kubernetes service or container instances to start building our end-to-end pipelines. Then I'll talk a little bit about Azure storage. Storage में Azure blob storage जो है, that is basically your large object storage, जिसके अंदर आपकी video files, bitmap images, आपके अगर कोई audio files आ रही हैं, या whatever kind of data you have, you can store it in a blob. Basically, it's storage for very large files and unstructured and for storing unstructured data. Similarly, we also have Azure file storage, जिसको आप बिल्कुल अपने file server की तरह use कर सकते हैं if you're using Windows or Mac or
और लिनक्स whatever, उसके अंदर जो आपका नॉर्मल फाइल सिस्टम है सिमिलर उस तरीके का इस Azure फाइल स्टोरेज के अंदर फाइल सिस्टम होता है and it uses addressing just like that and you can use it just as you would your desktop computer instance और इसके अंदर स्टोरेज उसी तरीके से मैनेज हो रही है. Then there's Azure Queue storage, not as relevant to this course per se, but good to know. आप basically message queues और इस किस्म की applications create कर सकते हैं जिसके through आप between different services या between different applications जो हैं messaging reliably convey कर सकते हैं. And then there's Azure Table Storage. It's basically a NoSQL store जिसके अंदर आपका unstructured data आता है independent of whatever schema you have, so it stores it in a tabular format. There are a few ready-made databases जो कि Azure offer करता है जिसके अंदर nameworthy आपके पास Azure Cosmos DB है, आपके पास Azure SQL database है और उसके अलावा nameworthy is Azure Synapse Analytics, which is the fully managed data warehouse. जैसे कि आपके पास you might be familiar with AWS में जैसे Redshift exist करता है उस तरीके से Azure Synapse Analytics is the fully managed data warehouse for Azure. Cosmos DB आपकी सारे के सारे NoSQL options provide करते हैं, whether you're using MariaDB or if you are using Cassandra DB या कोई और भी इस तरह की आपकी NoSQL options हैं. MongoDB, MongoDB आपकी या Cosmos DB, Cassandra DB, ये सारी की सारी options जो हैं आप अपनी इसके alternate के ऊपर Azure के अंदर आपकी Azure Cosmos DB यूज कर सकते हैं. जो आपका structured data उसे store करने के लिए Azure is routing on Azure SQL database जो आपकी fully managed relational database service है और इनका आपको generally अगर एक rough idea then you're good to go. But क्योंकि हम data science के अंदर large files के साथ deal कर रहे होते हैं और file dumps के साथ हम deal कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा केसेस में काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज के अंदर इस तरह होता है कि हमें अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज के साथ भी डील करना पड़ता है और बाय डिफ़ॉल्ट भी जो Azure मशीन लर्निंग सर्विस है वो आपको ब्लॉब और फाइल स्टोरेज प्रोवाइड करती है. So I see your question, Asadullah, why Azure treats blob and file storage differently. This question is somewhat nuanced और इसके अंदर थोड़ा सा technicalities के अंदर जाना पड़ेगा, but unfortunately it will deviate a little from our course content. तो मैं पहले relevant जो material है ना उसे मैं जल्दी से जल्दी cover करना चाह रहा हूँ because many of you have issues with time constraints. So बात करते हैं machine learning workspaces की. Now that you have an idea of कि basic कौन सी compute services हैं, basic आपकी storage कैसे होती है, basic आपका data store करने के लिए databases कौन सी available है Azure के अंदर, तो what is a machine learning workspace? तो Azure के अंदर workspaces are the top level resource for doing machine learning for data scientists. और इसके अंदर आपके सारे के सारे machine learning के जो भी cloud assets हैं वो आप ना सिर्फ इसके ऊपर create करके store कर सकते हो बल्कि you can also organize them based on what project it's for or what
डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यू सेट इट अप विद, आपकी कोई टेस्ट की एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट है, या कौन सी टीम उसे यूज कर रही है, ऑल दैट. और एक Azure machine learning workspace के अंदर we've already talked a little bit about some of these things, लेकिन Azure machine learning workspace के अंदर आपकी सारी कंप्यूट आएगी कि कौन सी वो VMs हैं, कौन सा वो हार्डवेयर पीस है उसके जिसके ऊपर आप मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन और सर्व कर रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं, और उनकी क्या उसके अंदर कितने कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितनी प्रोसेसिंग पावर है, कितनी रैम है, ऑल ऑफ दैट इज इन कंप्यूट. और वो सारी की सारी आप इसी वर्क स्पेस के अंदर से मैनेज कर सकते हैं. एंड यू कैन मैनेज द डेटा भी आपका, चाहे आप एज डेटा स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, वो Azure की machine learning workspace के अंदर ही मैनेज होगा. Outside of that workspace, it is still accessible if you provide the right kind of pointers, but it is contained within the Azure machine learning workspace. उसके अंदर आपकी वो वाली नोटबुक्स आ जाएंगी जिसके अंदर आप अपना मशीन लर्निंग कोड एंटर कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपनी एक्सपेरिमेंट्स लिख रहे हैं. एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो आपकी can you guys still see my screen? Ali, is there a problem with the screen? No, I can still see your screen, but you are on Azure machine learning workspaces. There's I can see slight power failure on my side. Let me unshare and reshare the screen on my laptop. Yeah. Sure. Sorry for the delay. Just give me 2 minutes. Okay, am I back on? जी वलीद. Okay. So आपके जो भी ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग आपकी जो एक्सपेरिमेंट की रन हिस्ट्री है, वो सारी की सारी भी आपकी वर्क स्पेस के साथ आ रही है. और जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो आपकी एंड टू एंड पाइपलाइन है वो भी उस वर्क स्पेस के अंदर कंटेन होगी, और जो मॉडल्स आप उन एक्सपेरिमेंट्स और उन पाइपलाइंस के प्रोडक्ट के तौर के ऊपर क्रिएट होंगे, जो मॉडल्स आप ट्रेन करते हैं, दैट विल आल्सो बी स्टोर्ड इन दीज वर्क स्पेसेस. So let's talk a little bit about how all of this is happening. तो जब आप Azure की मशीन लर्निंग वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए Azure क्रिएट कर देता है. उसके अंदर आपका एक बेसिक स्टोरेज अकाउंट होता है जिसके अंदर आपकी ब्लॉब और वो फाइल स्टोरेज होती है, और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपकी वर्कस्पेस के अंदर जो भी आपने डेटा यूज करना है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मॉडल ट्रेनिंग के लिए, मॉडल स्टोरेज के लिए, वो सारा का सारा आपके उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मेंटेन होता है. और ये स्टोरेज अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है व्हेन यू क्रिएट अ वर्कस्पेस. उसके अलावा you also automatically get set up with an applications insights instance, which is just a tool to monitor logs and monitor your predictive services in the workspace,
जो भी मैट्रिक्स वगैरह आपका ट्रेनिंग पाइपलाइन जनरेट कर रही हैं या जो भी मैट्रिक्स आपकी आपके रनिंग मॉडल्स जनरेट कर रहे हैं वो सारे के सारे आप एप्लीकेशन इनसाइट्स की इंस्टेंस के अंदर आपके लॉग होते हैं और आप उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं उसके थ्रू। सिमिलरली जब आप कोई भी कंप्यूट वगैरह सेट कर रहे हैं या कोई आप मॉडल इवन एज अ वेब सर्विस क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिकेशन इज इम्पॉर्टेंट और उस ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी जो भी कीज वगैरह जनरेट हो रही हैं उसके लिए आपकी Azure एक की वॉल्ट इंस्टेंस बनाता है विच इज़ डेडिकेटेड टू मैनेजिंग योर ऑथेंटिकेशन कीज और जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह उन मॉडल्स को एक्सेस करने के लिए या उन मशीन्स को एक्सेस करने के लिए यूज होंगे एंड इट मैनेजेस इट फॉर यू। Azure की मशीन लर्निंग वर्कस्पेसेस आपके लिए ये मैनेज करती हैं। ऑल्सो जो कंप्यूट टारगेट्स हैं जो वर्चुअल मशीन्स इन दी एंड आपने सेटअप करनी है इन मॉडल्स को और इन एक्सपेरिमेंट्स को रन करने के लिए और ट्रेन करने के लिए वो भी आपकी इसी वर्क स्पेसेस के अंदर आती हैं लेकिन ये आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं। इट डजंट रियली कम कन्फिगर्ड विद प्रीसेट वर्चुअल मशीन। कंटेनर रजिस्ट्री आपको एक मिलती है वर्क स्पेस के साथ जिसके अंदर जब आप कोई मॉडल्स ट्रेन करके रजिस्टर करेंगे तो वो उस कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर आ जाएगा जिसको आप कल डिप्लॉय कर सकेंगे राइट। और once you've set up your Azure machine learning workspace तो उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी उस वर्क स्पेस के अंदर क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कंप्यूट पावर इन देयर। अगर आप बड़े डीप लर्निंग मॉडल्स के साथ काम करते हैं यू विल प्रोबेबली नीड वेरी वेरी पावरफुल machines to work with और you will probably have large machine clusters जिसके अंदर मल्टी नोड एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं मे बी दर्जनों आपके पास machines added हैं possibly some of those will also have access to GPUs और उस scenario में it really becomes important for you to restrict and control access to your machine learning workspace because if it becomes compromised then basically you're opening yourself up to large potential security threats जिसके अंदर someone might be able to unauthorizedly gain access to your compute targets and use it for their own purposes, Bitcoin mining and whatnot की different किस्म की चीज़ें चल सकती हैं। तो उसके लिए you have to set up your role-based access control or within even organizations it is best practice to limit कि कौन से यूजर्स को आप एक्सेस प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज क्रिएट करने का और कौन से यूजर्स को आप एक्सेस प्रोवाइड करते हैं उन रिसोर्सेज को यूज करने का। तो फॉर इंस्टेंस डेवऑप्स या आईटी ऑपरेशंस टीम के पास ये एक्सेस होना चाहिए कि वो कंप्यूट रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें या वो जो भी किसी डेटा साइंटिस्ट ने टिकट जनरेट किया कि ओके आई नीड दिस मच कंप्यूट पावर तो आप उतनी कंप्यूट पावर उसे क्रिएट करके दे सकें but then these people would and should not have access to the data and the models as per whatever data privacy laws you have driving your organization चाहे आप GDPR फॉलो कर रहे हैं या if you're following HIPAA or whatever आपकी डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। इसके अलावा आपके डेटा साइंटिस्ट वगैरह को और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को बेसिकली ये राइट होगा कि वो राइट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकें और मॉडल्स को रजिस्टर कर सकें। अली इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जो कि आप चैट में नहीं रिजॉल्व कर सकें देन यू कैन ब्रिंग इट अप टू मी। श्योर मैं आपको बताता हूं। So Azure Machine Learning Service के basically दो editions हैं. There's an Enterprise Edition and there's a basic edition. और इन दोनों के अंदर there is
कुछ nuanced differences हैं, but on the bottom line what you can say is कि enterprise edition is the full-fledged version जिसके अंदर सारे के सारे features available हैं, और basic version के अंदर आपके core features तो available हैं, but you cannot use auto ML automated आप machine learning या data drift monitoring या concept drift वगैरह आप उसके अंदर नहीं monitor कर सकते, और बेसिक वर्जन के अंदर आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको एंटरप्राइज वर्जन यूज करना पड़ेगा. सो जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप मशीन लर्निंग एंड टू एंड पाइपलाइन क्रिएट कर रहे होंगे देन विल बी यूजिंग आवर एंटरप्राइज वर्जन, और जब इस किस्म की हमने फंक्शनैलिटी यूज करनी होगी तो हम एंटरप्राइज मशीन लर्निंग वर्कस्पेस क्रिएट करेंगे और उसके साथ काम करेंगे. कंप्यूट को Azure मशीन लर्निंग डिफरेंट हेडर्स के अंदर डिवाइड करता है, और यहाँ आपको एक 4 हेड्स नजर आ रहे हैं जिसमें कंप्यूट इंस्टेंसेस हैं, आपके कंप्यूट क्लस्टर्स हैं, इन्फ्रेंस क्लस्टर्स हैं, और आपकी अटैच्ड कंप्यूट है. सो कंप्यूट इंस्टेंस जो है वो आपकी बेसिकली स्टैंड अलोन मशीन आ रही है. बेसिकली आपकी सिंगल डेवलपमेंट मशीन होगी जिसके ऊपर आप नोटबुक एनवायरनमेंट रन कर सकते हैं या इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन कर सकते हैं, बट इसकी कंप्यूट पावर और इसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से यू कैन नॉट यूज इट फॉर डूइंग मशीन लर्निंग एट स्केल. If you want to do machine learning at scale, you have to go for a multi-node scalable cluster. And that kind of option becomes available to us in the form of compute clusters. So the only difference between these two is that compute clusters include multiple virtual machines, which you can provision on demand. And using this, you can basically the purpose of compute clusters is to train models. You don't serve models using compute clusters. For serving models, you have inference clusters, जिसके अंदर आपकी जो भी predictive services और model servings हैं वो उसके ऊपर आपकी inference clusters के ऊपर चलेंगी, which could be in the form of Azure Kubernetes service or Azure container instances. Or attached compute is, as I mentioned earlier, आपकी external कुछ resources हैं. Azure machine learning के बाहर आपने Azure Databricks का cluster create किया हुआ है, या if you've created Azure HD Insights cluster outside of Azure machine learning, you can also use that within Azure machine learning service as a compute target. Or mainly these 4 options you have to deal with when creating these machine learning services. If any of this is coming across as a bit confusing, it will become a lot more clear when we get to the demo part, and you will basically see all of this being created and being used to train a full end-to-end pipeline. So for creating a workspace, there are multiple options available to us in Azure Machine Learning. You can either do it through the portal, और पोर्टल के अंदर आपको एक वेब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलती है जहाँ पे आप ये सारे अपनी Azure की वर्कस्पेस सेट कर सकते हैं मशीन लर्निंग की. उसके अलावा you can also make use of the Python or R SDKs, और Python और R SDKs को यूज करते हुए आप एक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं फुली फंक्शनल. सो ऑन द राइट साइड आपको ये जो एग्जांपल नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली पाइथन कोड एग्जीक्यूटिंग द क्रिएशन ऑफ अ वर्क स्पेस. तो पाइथन के अंदर आपने सिर्फ एक Azure ML कोर का मॉड्यूल इंपोर्ट किया
एक पैकेज इंपोर्ट किया और उस पैकेज की क्लास के अंदर आपने you passed whatever name you're going to give that workspace, आपकी Azure की कौन सी सब्सक्रिप्शन है, कौन सा रिसोर्स ग्रुप है, and when you run this code you'll be set up with a machine learning workspace on Azure. Similarly आप bash या कोई आपका जो कमांड लाइन टूल है Azure का, उसको यूज करके ही आप वर्कस्पेस सेट कर सकते हैं, which will be much more relevant for people who are from DevOps or IT background, and they would want to stick with automating their Azure workloads by creating bash scripts. तो bash scripts लिख के उनकी वर्कस्पेस की क्रिएशन या उसके अंदर कंप्यूट रिसोर्सेज की क्रिएशन और वो सारी चीजें इस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हैं. You can also do that by using resource manager template, और रिसोर्स मैनेजर के अंदर आपको वो रिसोर्स मैनेजर के अंदर आप अपना कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा इस वर्कस्पेस के अंदर इतने कंप्यूट नोड्स होंगे, इतने नोड्स का कंप्यूट क्लस्टर होगा और उसके अंदर ये कोड डिप्लॉय होगा. So all of that you can set up in Azure resource manager templates. Mostly we will be working with the इस कोर्स की ड्यूरेशन के अंदर mostly we will be sticking with the first two options, portal और SDK, but we will also practice creating workspaces with Bash. Or moving on. Excuse me, Walid. Yeah. There's a question. Is SDK are mandatory? मतलब Python के साथ R कोई भी यूज करना mandatory है SDK से जब हम लोग काम कर रहे होते हैं? नहीं, R को यूज करना मैंडेटरी नहीं है. इट्स अप टू योर फेमिलियरिटी लेवल एंड योर कंफर्ट लेवल. अगर आप R के अंदर काम करते हैं और इफ आपकी फेमिलियरिटी R के साथ ज्यादा है, देन द ऑप्शन एग्जिस्ट कि आप R के कोड के अंदर पूरा का पूरा काम करें. अगर आपकी Python के साथ फेमिलियरिटी ज्यादा है और इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन वर्किंग विद Python, देन आप Python की SDK यूज करें. इट्स ऑप्शनल फॉर यू कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं, बिकॉज इन द एंड लैंग्वेज whatever programming language you use is just a tool to get the work done. So do not bind yourself to technology just because वो offer हो रही है. Also consider the ergonomics and the ease of use of that technology. And also weigh in the, अगर आप अपनी organization के अंदर कुछ practices set करने जा रहे हैं, तो you should also consider factors like आपकी organization के अंदर ज़्यादातर लोग किस तरफ उनका स्किल सेट जो है वो वे कर रहा है, पाइथन की तरफ कर रहा है या आर की तरफ कर रहा है. एंड देन यू डिसाइड के वेयर यू आर गोइंग टू, आप अपनी प्रैक्टिसेस को किस साइड के ऊपर लेके जाएंगे. इज इट गोइंग टू बी एसडीके फॉर आर? थैंक यू. ओके, सो वर्कस्पेसेस को क्रिएट करने के लिए ये 3 या 4 हमारे पास मेथड्स होते हैं, एंड वी विल प्रैक्टिस अ फ्यू ऑफ देम. और थोड़ी देर में हम इनमें से एक का डेमो भी करके देखेंगे. बट एक बार आपकी वर्कस्पेस क्रिएट हो जाए तो फिर उस वर्कस्पेस के अंदर आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने डेटा सेट्स कॉन्फ़िगर करके अपने मॉडल्स वगैरह की ट्रेनिंग के ऊपर आ सकते हैं. और उस सारे काम के लिए ना there are a few different development environments available कि किस तरीके से आप उसके ऊपर आगे मशीन लर्निंग के ऊपर या डेटा साइंस के ऊपर अपना काम शुरू कर सकते हैं. So the basic most thing when you set up a workspace is your machine learning studio. आप एक workspace create करते हैं, उसके अंदर the first screen that you see is launch machine learning studio. और आप स्टूडियो लॉन्च करते हैं तो आपके पास इस किस्म की एक स्क्रीन आ जाती है जिसके अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ये अवेलेबल हैं, इनको आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं.
through your machine learning studio. You don't have to go outside of your machine learning studio to do any kind of data science work. So which is a nifty little thing कि आपको अपने Azure के पोर्टल का एक्सेस जो है अपने डेटा साइंटिस्ट वगैरह को नहीं देना पड़ेगा, और you can just keep them confined to the machine learning studio. और इसके अंदर there are graphical tools to develop your data science pipelines. आप डिजाइनर का यूज कर सकते हो, जो machine learning designer है, which is your drag and drop interface for machine learning model creation and deployment. और उसके अलावा graphically आप you can also set up automated machine learning, or AutoML. Basically, as I've said before, this is just a way of training a model जिसके अंदर the Azure Machine Learning Service will intelligently decide which combination of algorithms, कौन से different किस्म के algorithms आपके data के ऊपर try करें, और कौन सी different pre-processing techniques हैं जो कि आपको जो try करके आपका best model आपको ला के दे सके. तो this basically abstracts away all of the machine learning work, and even though it is somewhat usable and workable with simpler data sets. So for instance, अगर आपके बहुत ही simple data set है जिसके अंदर 8-10 आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा features हैं, और कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो आपके ट्रेनिंग लेवल्स हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स किस्म की रिलेशनशिप्स नहीं एग्जिस्ट करती, then AutoML is the way to go. अगर आप अपने डेटा साइंटिस्ट का डेवलपमेंट टाइम बचाना चाहते हैं, और अगर आप या फिर एज डेटा साइंटिस्ट आप खुद उसके अंदर आप अपनी एफर्ट जो है उसे बचाना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप एंड टू एंड पाइपलाइन लिखेंगे तो उसके अंदर इट वुड टेक यू 4 to 6 hours, और AutoML का एक्सपेरिमेंट जो है आपको 5 से 10 मिनट के अंदर सिंपलर डेटा सेट्स के ऊपर आपको ऑप्टिमल किस्म का मॉडल भी निकाल के दे देगा. सो जो हमारे पास मशीन लर्निंग की डिज़ाइनर इंटरफेस है वो बेसिकली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड करती है. यहाँ पे आप मुख्तलिफ मॉड्यूल सर्च करते हैं जो कि Azure ने प्री बिल्ड आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं. You pick up your data, you drop it on the canvas. Like on the right we have ये flight delays का कोई data set है, ये यहाँ पे canvas के ऊपर drop किया हुआ है, and then you search up an operation. अगर मैं इसको normalize करना चाहता हूँ then I'll pick up the normalized module and drop it there. और इस तरह drag and drop और उसके दरमियान इन connections से I will decide the flow of my machine learning pipeline, और उस pipeline की execution कैसे होगी. And once you have set up the pipeline, आप इसे submit कर सकते हो अपने उन्हीं compute resources को use करते हुए जिनके बारे में हमने बात की कि you can define the compute cluster, और आप इस pipeline के साथ एक compute cluster attach करो, और फिर आप कहो okay, now I am ready to do the training at scale, or use this compute cluster to train a model. Similarly, once you've trained that model, तो आप उसकी inference pipeline automatically create कर सकते हैं, and we'll see that in a few minutes कि कैसे कितना easily आपको ना सिर्फ ये training pipeline create करना बल्कि उस training pipeline को automatically inference pipeline के अंदर change करना कितना easy है. And once you've created a inference pipeline, तो आप उस pipeline को एक वेब एंड पॉइंट के ऊपर आप पुश कर देते हैं, जिसका इन अदर वर्ड्स आप एक वेब सर्विस क्रिएट कर देते हैं. एक वेब का यूआरएल आपको मिल जाता है विद सम ऑथेंटिकेशन, जिसके ऊपर व्हेन यू थ्रो डेटा इन रियल टाइम यूजिंग अ वेब सर्विस, तो आपको इन द रिजल्ट यू विल गेट द मॉडल प्रेडिक्शंस. और इन ट्रेनिंग पाइपलाइंस को पब्लिश करने की, इन्हें चेंज करने की, इन्हें वर्जन करने की सारी कैपेबिलिटी यू गेट आउट ऑफ मशीन लर्निंग डिजाइनर. और आप
बैच पाइपलाइंस बिल्ड कर सकते हैं और रियल टाइम inference pipelines build कर सकते हैं using machine learning design. The other development environment I've already talked about, which is the Python SDK, very popular these days. और R से ज़्यादा functionality I guess in the Azure machine learning you will get out of Python. And in overall I guess the data science community, especially in Pakistan, Python is the more popular tool of choice. और इस SDK के अंदर सारी की सारी वो फंक्शनैलिटीज है जो हमने पहले पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस की हैं कि आप अपनी डेटा सेट्स के डिफाइन करने से, आपके कंप्यूट कॉन्टेक्स्ट के क्रिएट करने से लेकर मॉडल्स की ट्रेनिंग और एंड टू एंड पाइपलाइन की डिप्लॉयमेंट, और एक बार आपने अपना मॉडल डिप्लॉय कर दिया तो फिर उसको इवन उस मॉडल से प्रेडिक्शंस जनरेट करवाना इन रियल टाइम या फिर इन बैच, ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल विद योर पाइथन एसडीके. और इसके अंदर आपकी because you're in the end writing Python code, then it is very easy to automate your Python asset creation, और आप अपनी configuration environments वगैरह और resources वगैरह ये सारा का सारा DevOps के आप अपने workflows, CI/CD pipelines वगैरह इसके साथ काफ़ी easily link कर सकते हैं और incorporate कर सकते हैं अपनी in operations के साथ. Python SDK को सेट करने के लिए you will have to install the pip packages, और if you are familiar with the pip environment तो उसके अंदर there is this Azure ML SDK package जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर आप उसके साथ ऑटो ML या explainable machine learning packages इंस्टॉल करना चाहते हैं तो you will have to define that in these square parentheses कि आप वो वाले ऑप्शनल मॉड्यूल्स भी साथ सेटअप करना चाहते हैं. And we'll get to these specific sub modules when we get to these topics. लेकिन in the start we can make do with the generic Azure ML SDK. और SDK एक बार आपने अपनी Python environment के अंदर इंस्टॉल कर दी तो फिर all you have to do in order to start using that SDK in your Python code is कि जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका Python कोड पड़ा हुआ है, आपकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर आप अपनी एक JSON कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप अपनी Azure अकाउंट की सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप और जो वर्कस्पेस उसके अंदर आपने क्रिएट किए हैं उनके नाम और ये वाले पैरामीटर्स आप उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेट करते हैं, and then you can just initialize the workspace from config and start using it. That's all you have to do in order to start working with your Python SDK. The other way to start using the development environment is the Azure CLI. Of course, आप अगर चाहे आप विंडोज़ की कमांड लाइन यूज़ करें या आप लिनक्स की बैश एनवायरनमेंट यूज़ करें, you will have to install the Azure CLI. और उसके अंदर once it's installed तो फिर the simplest thing you have to do is just type out the AZ tool command, और उसके अंदर सारी की सारी ये आप वही जो टास्क हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आप कर सकते हैं. Of course, there is extensive documentation available on the syntax and on the commands available in this, and we won't be covering each and every one of them, but we'll be looking at the most crucial one of these once we get to the practical part. इसके अलावा we have of course the option to link our Azure machine learning workspace with our Visual Code Studio. अगर आप Visual Studio use करने के आदी हैं, then you can just अपनी उसी configuration वगैरह को use करते हुए you can configure your Visual Studio environment, development environment on your desktop
with your machine learning workspace, और उसके अंदर आपके सारे experiments, pipelines, compute, ये सारे के सारे contexts आपके पास यहाँ पे available हो जाएंगे. You'll be able to run a notebook like code interactively in the Visual Studio Code environment. So now that we've talked about some of the abstract concepts, कि compute targets कैसे create होंगे, कौन से resources हैं जो कि Azure machine learning workspace के अंदर आते हैं, और कौन सी development environments हैं जिनको आप use करके आप अपनी machine learning का code या data science का code जो है लिखना शुरू कर सकते हैं. Now we move on to the machine learning experiments. And experiments are the most fundamental types of processes in the Azure machine learning service. Or all an experiment is के आपकी कोई experiment script है, या it could be a training script, it could be any Python script or R script, और उससे आप बेसिकली एक उसको जब आप रन करते हैं तो बेसिकली एक प्रोसेस इनिशिएट होता है which is your machine learning experiment, and that experiment yields two things. It yields metrics and it yields some outputs. और to give you some solid examples के metrics क्या होंगे या outputs क्या होंगे और experiment की script क्या होगी, it could very well be कि आप Python के अंदर एक कोड लिख रहे हैं जिसके अंदर आप scikit-learn में एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, और that would be your experiment script जिसके अंदर आपने Python का कोड लिखा हुआ है. that would be your .py file. उस .py फाइल को आप Azure machine learning service के अंदर as a machine learning experiment रन करेंगे, और उस .py फाइल के अंदर आप जब मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो maybe you are concerned with the accuracy of that model, and that accuracy of that model is the metric that you are logging, and you are outputting that accuracy metric, or accuracy के अलावा maybe you want to log precision or recall of your classification model, और वो सारा का सारा आप लॉग करते हैं, and that gets output as metrics. और जब मॉडल ट्रेन हो जाए तो मे बी आप एज अ पिकल फाइल उस scikit-learn के मॉडल को स्टोर कर रहे हैं ऑन डिस्क, एंड दैट गेट्स आउटपुट एज योर फाइल आउटपुट्स. ठीक है. सो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस भी इसी एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस के अंदर कन्वे किया जा सकता है. सिमिलरली आपका जो अगर आपके पास ऑलरेडी एक मॉडल अवेलेबल है और उस मॉडल से आपने स्कोरिंग जनरेट करवानी है, तो वो भी आपकी एज एन एक्सपेरिमेंट जो मैनेज किया जा सकता है. आपने अगर एक मॉडल की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, वो भी एज एन एक्सपेरिमेंट मॉडल की जा सकती है, जिसके अंदर आप मॉडल और इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट को एज इनपुट लेते हैं, और फिर मॉडल की जो परफॉर्मेंस आ रही है यू आउटपुट दैट एज मैट्रिक्स, और मॉडल ने जो डेटा को स्कोर करके उसके अगेंस्ट जो प्रेडिक्शंस जनरेट की हैं, दैट फाइल मे बी एज अ CSV or a data file that gets output as the output file of that experiment. और experiments को again Azure SDK के अंदर आप ना सिर्फ Azure SDKs के अंदर आप यूज कर सकते हैं, बल्कि डिजाइनर के अंदर भी यूज कर सकते हैं. और डिजाइनर के अंदर यूज को अभी मैं थोड़ी देर में डेमो करूंगा. वी आर स्टार्टिंग विद द डिजाइनर इन अ लिटिल बिट, बट Azure SDK के अंदर अगर यूज करने की एग्जांपल को देखें, बिकॉज दिस इज अ बिट इजियर टू एक्सप्लेन फॉर बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम computer science or technical background, you will be able to understand a little bit of code.
कि all we are doing is कि within our Python script, जो भी हमारी script चल रही है, उसके अंदर I've defined an experiment, and in that experiment I start logging things. Now when I start logging things, it creates a run object, और उस run object के through ही whatever two outputs I've shown you here, चाहे वो metrics log हो रही हैं जो कि मतलब singular किस्म की आपकी observations हैं about accuracy या precision या recall, या चाहे आप complete files को आप log करना चाह रही हैं, both of those can be managed through the run object. और इस run object के through मसलन यहाँ पे in this example all we are doing is कि we're creating a metric called observations, और उस observations के अंदर maybe मैं number of observations जो मेरी CSV फाइल की लेंथ है या जितने number of records हैं, जितनी number of rows हैं, वो मैं काउंट करके यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ. तो उस एक्सपेरिमेंट के रन होने के बाद उस एक्सपेरिमेंट की का जब मैं लॉग खोलूंगा तो उस लॉग के अंदर मुझे ये सारा का सारा जो भी मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लॉग की होंगी या जो भी मैंने कुछ और मैट्रिक्स भी लॉग की होंगे वो सारे के सारे मुझे नजर आएंगे. And then once the experiment is complete, then of course I have to end the experiment by running run.complete. तो दो तरीके से ये वाली लॉगिंग की जा सकती है. एक तरीका वो जिसके बारे में मैंने अभी बात की, which is using the run object. The other way that you can log from whatever script you are running is by using print statement. So whatever print statement you are running, उसको उसमें जो भी आप वैल्यू प्रिंट करेंगे that will get logged. And और रन ऑब्जेक्ट के साथ जैसे यहाँ पे भी मैंने run.log का एक आपको एग्जांपल दिया, it was logging a single number. तो there will be certain instances जिसके अंदर आप single number की बजाय maybe it's a list that you're trying to log, or if it's a certain row that you're trying to log, कोई ऐसी मसलन अगर आप anomaly detection का कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और उस सिनेरियो में अगर आप कोई fraudulent कस्टमर को अगर आप या fraudulent ट्रांजैक्शन को कैच करना चाह रहे हैं तो it will be a full row of that transaction जिसे आप लॉग करना चाहेंगे. And given whatever you want to log, if it's a dictionary, if it's a row, if it's an image file, or if it's a list, you will change whatever function you're calling here. यहाँ पे आप run.log से single observation को log करती हैं और depending on किस किस्म का मॉडल आप ट्रेन कर रहे हैं और उससे आप किस किस्म की चीज़ लॉग करना चाह रहे हैं, आप अपना लॉगिंग मेथड जो है ना यहाँ पे चेंज कर लें. एक बार आपने लॉग क्रिएट कर लिया तो फिर उसको देखने के लिए, एंड आई नो दिस इज टू मच कोड और इस वक्त शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट वंस वी गेट टू प्रैक्टिस it will become really easy for you, and you will get scenario based practical examples of these. तो एक बार आप चीज को लॉग कर चुके हैं, उस रन को लॉग कर चुके हैं, then you can use that same run object to view those logs interactively in your notebook environment. या फिर अगर आप notebook environment नहीं भी यूज कर रहे, you can go ahead and Python के अंदर ही आप उन metrics को निकाल के into certain data structures और data objects के अंदर उनके साथ आप कोई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, या if you want to publish it to a REST service जो भी आपके logs आए हैं, you can also do that by accessing it using the run method. और secondly वो logs जो आपने क्रिएट किए हैं, those get written to disk और उसे आप serialize कर सकते हैं using JSON. और तीसरा और सबसे आसान तरीका है अपने उन लॉग्स को और उन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखने का, वो है आपका Azure का लॉग मॉनिटर, जिसका मतलब है कि आप सिंपली अपनी
मशीन लर्निंग स्टूडियो खोलेंगे और मशीन लर्निंग स्टूडियो के अंदर उस पोर्टल के अंदर से आप अपना एक्सपेरिमेंट खोलेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप अपने सारे के सारे लॉग्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स एज एन आउटपुट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट क्रिएट हुए उन्हें आप व्यू कर सकते हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो जस्ट लाइक आई सेड बिफोर, कुछ फाइल्स हो सकता है आप CSV फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो या आप मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं या आप कुछ कोई और फाइल है वो आप सेव कर सकते हैं एज एन आउटपुट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. और एक एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ये सब काम कर सकते हैं. आप मैट्रिक्स लॉग कर सकते हैं, आप अपनी आउटपुट फाइल्स जनरेट कर सकते हैं और अपनी और ये सारा का सारा होगा depending on whatever script you've written या whatever your pipeline workflow is. और experiment is the most basic kind of concept जिसके ऊपर आपका सारा machine learning workflow चलता है Azure की workspace के अंदर. और I guess conceptual slides के साथ we're done और we can move on to the demo part, but I will leave it up to the class if we want to go for some questions. Yeah, if we want to take a break before moving to the demo part, so I will leave it up to you guys. Excuse me, so I have a couple of questions. First question is, what is the difference between clustering and Kubernetes? Either they are same or different from each another. And the second question, I believe, just wait for a while. I put second question also over there. हाँ, एक ये के Azure और ये जो AWS है, ये दोनों किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं? Okay, I'll begin with the and one more question, but could you please मुझे वो DevOps का concept जो है ना ये नहीं समझ आया था. If you can explain it again, थोड़ा सा इसको explain भी कर दें कि what is actually DevOps. DevOps, why we create DevOps and what are the responsibility or what kind of these stuff for DevOps environment. ठीक है, एक टाइम पे I guess I can focus on one question, so I'll. Sure, please go ahead. I'll begin with दो तीन questions थे. सही है. I get it. So मैं आपके most recent question से I'll start with that. DevOps का basically आपके software industry के अंदर overall ये role है to keep the things functional. Or as more and more development happens, और उस development को कैसे facilitate करना है और उस development के लिए आपकी environment सही set हुई है या नहीं हुई है, कोई नया code लिखा जा रहा है तो उस code की testing वगैरह के लिए क्या environment use हो रही है, और फिर once you are finalizing that code तो फिर जो चीज़ क्लाइंट को नजर आ रही है, जो चीज़ एंड यूजर को नजर आ रही है, उसके साथ इस चीज़ की कैसे इंटीग्रेशन हो रही है, दैट इज व्हाट डेवऑप्स. और जैसे डेवऑप्स का ये रोल एग्जिस्ट करता है आपकी डिफरेंट कोडिंग डेवलपमेंट के लिए, चाहे आप वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से डेटा साइंस के अंदर भी आपको चीज़ें फंक्शनल रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. अगेन आपको सेम किस्म के थोड़े बहुत मिलते जुलते किस्म के मसले मसाइल
का सामना होता है when you are dealing with a productionizable environment. जब आपने अपने क्लाइंट्स को और अपने एंड यूजर्स को वैल्यू भी डिलीवर करनी है, और आप ये भी चाहते हैं कि आप हर रोज या हर एक महीने बाद नए नए मॉडल्स भी ट्रेन करें जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और अच्छी एक्यूरेसी मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जनरेट कर सकें और एक्चुअल वैल्यू प्रोड्यूस कर सकें यूजर्स के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहते हैं कि जब आप नए मॉडल्स को रिप्लेस करते हैं, जब आपने कोई आज एक नया मॉडल ट्रेन किया और वो पिछले मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो जब आप ये नया मॉडल अपने यूजर को देने जा रहे हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर और अपने एंड यूजर को सर्व करने जा रहे हैं, तो उस दौरान आपकी सर्विस इफेक्ट ना हो। उस दौरान ऐसा ना हो कि 2 घंटे के लिए आपकी कंपनी की वेबसाइट डाउन जा रही है या आपकी साइट डाउन जा रही है कि उसके ऊपर सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। सही है? Fine, fair enough. As far as my understanding concerned, this is actually a development environment, which should I say कि हमारा टेस्ट environment है basically, जिसके अंदर अपनी जो चीजें हैं उनको डेवलप करके टेस्ट करके फिर जो है उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाते हैं। ऐसे ही कॉपी कर देते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, राइट? डेफिनेटली आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोडक्शन एंड आपकी टेस्ट, दिस इज एक्चुअली ब्रिज, this environment is actually a bridge between your development and production environment, right? Right. चलिए Okay, ये जो है fine, वो fair enough. ये जो एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली जो डेवऑप्स है इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये आपके कोड आउटपुट या आपकी जो भी चीज़ आउटपुट होती है वो आपको डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन तक एनवायरनमेंट तक ले जाने के लिए पूरी फैसिलिटेट करती है, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस ये बनाते हैं। डेवऑप्स जो है बेसिकली इस प्रोसेस को जो है मेंटेन करता है और उसके अंदर उसको जो है वो ऑपरेशनल करता है। तो ये तो हम DevOps की चीजों को ही कॉपी कर बना के वो प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली डिप्लॉय कर देते हैं, ऐसे ही ना? जी, डेवऑप्स से लेके टेस्ट पे जाता है, टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के प्रोसेस के बाद जो आउटपुट निकलता है वो जो के टेस्टेड आउटपुट होता है उसको ले आके फिर वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करता है। ठीक है, fair enough. Thank you so much. And one more question, sir. What is actually resource group? ये हमने पढ़ा है ना, इसके अंदर रिसोर्स ग्रुप होता है जिसको हम उसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं अपने स्पेस के साथ। मैं रिसोर्स ग्रुप को एड्रेस करूंगा वंस वी स्टार्ट विद द डेमो, और प्रैक्टिकली वो जब मैं आपके सामने ये चीजें क्रिएट कराऊंगा। ठीक होगा, फेयर इनफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, आई एम सॉरी मैं वो बार-बार क्वेश्चन किए जा रहा है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुई तो मेरा माइंड जो वहीं पे स्टिक हो गया कि यार ये पता नहीं क्या चीज है, ये पता नहीं क्या चीज है। एक उसमें और चीज होती है क्लस्टरिंग एंड कुबरनेटिव, आपने ये चीजें यूज किया, ये दोनों चीजें सेम है या क्या? I have an idea about Kubernetes. Kubernetes is like API ना, आपके ये जो एक कहना चाहिए कि अगर क्लाउड की अगर हम बात करें ना तो वो वहाँ पर डिफरेंट रीजन्स होते हैं, ठीक है? रीजन्स के अंदर जाके फर्दर आगे काफी डीप लेवल के ऊपर जाके क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, क्लस्टरिंग के साथ ही कुबरनेटिव। और ये मेरे क्लाउड के ऊपर ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ था, मुझे इसकी वहां पर भी समझ नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको डिस्कस कर लूं। Right. So Kubernetes is actually not an API. Kubernetes is basically a framework जिसके थ्रू आप बेहतर अपनी to put it into very simple words, Kubernetes आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसके थ्रू आप मिनिमल पैकेजिंग के साथ अपना कोड जो है ना उसे डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट के अंदर पुश कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे मैनेज होगा या वहाँ पे ये डिपेंडेंसीज होंगी या नहीं होंगी। सही है? तो इसका थोड़ा सा अगर मैं कॉन्ट्रास्ट दूं ना आपकी वर्चुअल मशीन्स के साथ, यू गॉट द वर्चुअल मशीन्स कॉन्सेप्ट, राइट? यस। वर्चुअल मशीन्स के अंदर तो पूरा का पूरा आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफाइन कर रहे हैं और हर चीज डिफाइन कर रहे हैं ना। कुबरनेटिस के अंदर
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो मल्टीपल आपके इमेजेस के दरमियान शेयर हो रहा होता है और उसके ऊपर आपके कुछ पॉड्स बन रहे होते हैं जिन पॉड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जो रेलेवेंट कोड है जो फाइन 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 लाइब्रेरीज जो आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल के चीजों को ग्रुप करके हम उसके अंदर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर हम प्रोसीजर या पैकेजेस की बात करें, जो पैकेज है इसके अंदर मल्टीपल प्रोसीजर होते हैं, बट वो प्रोसीजर जो एक दूसरे से इंटर लिंक या इंटरलेट होते हैं उनका हम एक पैकेज बना देते हैं ना। एग्जैक्टली और तो आप ये उस कुबरनेटिस पैकेज जस्ट लाइक ए पैकेज। एग्जैक्टली और आप उस पैकेज को एज अ डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। Fine, fine. But for अपनी requirement का we just pull out that particular procedure from that जो है ना वो उसके procedure से उसको pull out कर लेते हैं पैकेज procedure को पैकेज से और फिर हम उसको accordingly use कर लेते हैं। ऐसे ही है ना? Exactly. चलो ठीक है। Thank you so much. Thank you so much. That's it. Assalamualaikum sir. जी उस्मान। सर मुझे पूछना था कि when I was taking the Azure class, मतलब before मैंने लोगों से पूछा था Azure कैसा है, हर बंदा कहता था कि इसका बेहतर alternative AWS की cloud computing है। For example उनके पास Deep Composer वगैरह है, तो ये true है या किस तरीके से Azure मतलब कि वो competitive advantage पे होगा या सीखने का फायदा है compared to AWS? Compared to AWS, this is not a debate I would like to start in this in this course. But if you want to discuss this off record, so feel free to drop me a message after class because this is मेरा ख्याल है हम अपनी आज की conversation या in class conversation purely अपने Azure की स्किल्स को बिल्ड करने के ऊपर रखें अपना सारा फोकस, तो वो बेहतर है। जी सर बिल्कुल सर, agreed. I'll contact you later then. Thank you so much. Sir, I have a question here that just for my understanding, you described the role over there. There was a DevOps. So DevOps also covers up the Python or R or something different from there. So let me just quickly go back to the slide that maybe this is the slide you were talking about. Yes. This one, the first one, the DevOps and IT operations. Right. So what is being covered in this area? Data science, I'm clear that what you explained. So the point I wanted to convey here was that within your organizations, within your organization, there will be different teams working, and it is not always a good idea to give every team access to all the available resources, right? So if you have got an IT operations team or a DevOps team, it will probably be their responsibility to create and manage the resources on Azure needed for your other teams to function, right? So if you've got a data science team and they want a development environment on Azure, the data team probably won't create those resources themselves. They will probably put a request to the IT operations team, and the IT operations team would have the right access on access policies on Azure to be able to create those resources. Even if someone from the data science team tried to create those resources, if you have got the right role-based access control enforced, they won't be able to create the resources. So I just wanted to highlight some of these practices in US. Not generally talking about what an ideal role should be, but perhaps this is something that you would be able to apply in your organization. And again, this is just subjective. Different organizations work differently and may decide to go with completely different kind of practices. So actually, that you highlighted that the Python and R, then I'm from the financial institute, right. And we are going to be a bank. So I'm thinking that if we look Python and R team,
So would it be considered a DevOps team, or that is only a development team? No, that would be your data science team who working on the model development. You would really need resources to support this team in setting up the right IT resources or your cloud resources. You would need even if you don't set up a complete team for that, you would probably need one or two people who know how to do that stuff and just keep the extreme kind of permissions and access to those select few people. I got it. I got it. Thank you. So, any other questions? If there are no questions, then perhaps we can take. Sir, one more question here that you talked about the enterprise and the standard, and the core things are being covered in the standard, and rest like drag and drop and other features only available in the enterprise. Right. But I want to just figure it out that what could be any estimation the cost difference if I just start thinking that if I go for the enterprise solution something, so what shall I keep in my mind before discussing my management? Okay, so for that there is a very simple thing that we can do. Azure provides you a way to estimate your machine learning costs. The simplest way to do that is you search up. Let me do it right now. Azure pricing, right? And you search for pricing, and there is Azure machine learning pricing page. In that, you can see a complete list of the differences between your basic and enterprise version of machine learning editions, and what sort of features are available in the basic. For instance, you cannot create and run experiments in Studio Web Experience using the basic one, right? That's helpful, sir. Thank you, sir. Not only that, but you will also be able to select the right version, which region you want to deploy your data science environment in. So for instance, if I select Southeast Asia and Asia Pacific, that's the Singapore region. And in that region, you can get a complete list of whatever instance types there are available. And against those instance types, for instance, for the duration of this course, we will be using DS2 V2 type machines, right? Which have 2 cores and 7 GB of RAM available. For that, you would be able to see what kind of per hour pricing you've got, as well as what kind of discounts you can get if you reserve that machine for longer periods of time. So if you reserve that machine and give a deposit for 1 whole year, and you reserve it for 1 whole year, then you get a discounted price on that, 50% discount on that. Sir, how did you search it? What you typed in Google? I will share this link via the chat. This is okay. Then I will look into it. Thank you, sir. Thank you. And I will also attach this in the. I will also put this link in the slides before I share it with everyone, so that you can go over this on your own time if you want to look at the different machine types available and what are the exact nuanced differences between the basic version and the enterprise version of Azure Machine Learning service. Got it, sir. Got it. Thank you. So, are there any more questions? Sir, what are the preferred way of solving ML problems? Like you can use AutoML for designing algorithm, choosing auto algorithm. I mean, Azure chooses itself algorithm, or Python, your own code, or R. What's the difference and the preferred way? Right. So I guess I've talked a bit about that. So
So there are a few trade-offs whenever you're deciding whether to go with AutoML or whether you want to write code for creating your data science solution, right? And if you want to create your own data science solution by writing code from scratch, then it would take more time and more effort on the part of whichever machine learning engineer is working on the problem, right? And and at the end of the day, that means that the organization is having resource spend all that time on solving a problem. तो फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप हाउसिंग प्राइसेस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज द एबीसी ऑफ हेलो वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस प्रॉब्लम्स. कोई भी मशीन लर्निंग सीखता है तो सबसे पहले हाउसिंग प्राइसेस की प्रॉब्लम से वो गुजरता है. तो अगर आप वो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको खुद से कोड लिखना पड़ता है, if you're having to write that code, you will see that even if it's the most simplest of code, if you have to write it yourself, it will take you about even at the least amount of time 10 to 15 minutes, right? But if you use automated machine learning, then because it's a simple problem, it is solvable with AutoML, but and it will take much less time. You just have to create an experiment just like that. You have to give it the data set and it will be able to solve that problem in a lot less time than it would take you to write that code. So that is the trade-off between using AutoML and having to script it out yourself, right? And the other kind of factor in this trade-off is the complexity of the problem that you're trying to model. For instance, आपके अगर features ही इतने ज़्यादा complex हैं या उसके अंदर इतनी ज़्यादा complex relationships exist करती हैं between the feature and the label, कि AutoML को बहुत ज़्यादा time लग सकता है. AutoML will necessarily try a number of different kind of models जो आपने define किए होंगे वहाँ पे. और AutoML को मेरा ख्याल है हम थर्ड और फोर्थ डे फोर्थ या फिफ्थ डे के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे कि AutoML को हमने कैसे रन करना है. लेकिन बेसिकली उसके अंदर आप ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा SVM भी यूज करके देख लो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम भी यूज करके देख लो, डिसीजन ट्रीज वाला मॉडल भी यूज करके देख लो, XG बूस्ट भी यूज करके देख लो. और ये सारे के सारे मॉडल्स जब आपको रन करने पड़ते हैं और आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो इन सारे मॉडल्स को रन होने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग डेटा सेट यू गॉट. बट अगर आपको पहले से पता है कि ये डेटा सेट को मॉडल करने के लिए इवन अगर मैं सिंपल सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल लगाऊं तो इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर भी ये काम करेगा, तो उस केस में राइटिंग आउट द स्क्रिप्ट विल टेक lesser resources and lesser time for you to come up with the solution. So I hope you got the trade-off between scripting and AutoML. We'll talk more about this on the fourth day, but I hope that now it's a bit more clear. Thank you. Yeah. So any other questions on the floor? Otherwise, we'll take a 10 to 15 minutes break before the demo. Sir, one last small question. क्या अभी हम बात कर रहे थे ट्रेड ऑफ्स की, जो हम खुद से कोड लिखते हैं वो और AutoML का, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक मेरी ये एक वो था क्वेश्चन के जो डेटा क्लेंजिंग है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ होगा, ऐसे ही है कि ये जो AutoML है ये हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम अपने डेटा को क्लेंज भी कर सके. फॉर एग्जांपल नल वैल्यूज वगैरह अगर उसके अंदर आ रही है, हाउ टू कंपनसेट नल वैल्यूज. अगर हमारे पास आउटलायर्स आ रहे हैं तो उनके ऊपर आउटलायर्स भी रिमूव किए जा सकते हैं. लाइक इस तरह के ऑप्शन भी AutoML के थ्रू हम कर सकते हैं, या हम इसको पहले से कंसीडर किया होगा जी हमें जो डेटा सेट मिल रहा है उसके अंदर सारी की सारी चीजें जो है ना वो प्रॉपर है और डेटा जो है वो
ऑलरेडी जो इंटरलिंक्ड है? ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा प्री प्रोसेस्ड हो before AutoML can start using it. AutoML is not about modeling, it's also about pre-processing. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, it by to train a model using a combination of algorithms and data techniques. So that also सर includes outlier removal. That also, yeah. फाइन, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि जो फॉर एग्जांपल हम आउटलायर को रिमूव करने के लिए हम यूजुअली स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, लाइक उसमें मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, तो वो सारे के सारे मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर वो वाले ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए ऑटोमेल के अंदर, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Exactly. Yes, very nice. Thank you so much. Thank you so much. But again, on the trade-off part, I will warn you about this. कि even though this sounds like a dream come true, कि आपको करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, data set input करना है और model खुद से train हो जाएगा, pre-processing भी हो जाएगी. But the downside of it is कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा computation cost आएगी. Because Okay, fine. Because आप सारे के सारे combinations of pre-processing techniques और सारे के सारे combinations and permutations of those pre-processing techniques and algorithms को try करके AutoML देख रही होगी कि कौन सा लगेगा, जिसका मतलब है कि आप जो काम एक सिंगल ऑपरेशन के साथ कर सकते थे, हो सकता है उसके लिए आपको 100 ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, जिसका मतलब सर इसमें ये देखें, सॉरी फॉर इंटरप्शन के ये जो हम पाइथन के ऊपर ये काम जब कर रहे थे, मशीन लर्निंग का कोई ना कोई एल्गोरिथम हम कॉल करते हैं, वहां पर हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, तो लुकिंग एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इसके ऊपर कौन सा जो है ना वो हमारा एल्गोरिथम अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल रीइंफोर्समेंट है या इसके ऊपर हम रिग्रेशन कर रहे हैं, रिग्रेशन के ऊपर भी लीनियर रिग्रेशन के, मतलब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ही वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ऑटो मशीन लर्निंग के अंदर ये खुद से डिसाइड कर रहा होगा। ऑटो मशीन लर्निंग के अंदर you can help the AutoML by pre-setting a certain set of algorithms. यानी आप AutoML को ऐसे हेल्प कर सकते हो कि अच्छा ये लिस्ट है उन एल्गोरिथम्स की जिनके अंदर आप AutoML सर्च कर सकती है, और इनमें तो ये तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं हो जाएगा ये? हाँ, आप उसको 35 से 40 एल्गोरिथम दे देते हैं और फिर हम बाद में वेट करते हैं कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमल रिजल्ट किस एल्गोरिथम का आपके सामने आता है। एग्जैक्टली यही एग्जैक्टली वो चीज थी जिसके बारे में मैं आपको वार्न कर रहा था कि इवन दो दिस साउंड्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, लेकिन उसे वो सारे के सारे मॉडल्स ट्राई करने पड़ेंगे और उनके कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और आपकी क्लाउड कॉस्ट भी बढ़ेंगी। तो चलो खैर इसके ऊपर जब आएंगे उसको उस ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट मैंने वो भी कह रहे थे ना कि real estate का प्रोजेक्ट, so when real estate का प्रोजेक्ट I have done some couple of more project on Python by using Jupyter notebook ना, तो वो उसके अंदर तो वो है obviously इसमें प्रोग्रामिंग आपकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, बट यू आर वेरी एक्यूरेट, आपको पता होता है कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपने यूज करना है, डेटा क्लीनिंग के अंदर आपने किस तरह यूज करना है, आपके आउटलायर्स क्या क्या आ रहे हैं उनको रिमूव कैसे करना है। ऑल्दो इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, but it's very accurate as far as my knowledge and my experience concerned actually. So बाकी चलो देखते हैं सर आगे जब ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन आता है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स कौन से हैं तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। Any other questions on the floor? Okay, then perhaps we can take a short 20-minute break. Let's get back to the class at 12:45 or 12:45 के ऊपर we will begin our demo of the of building our first machine learning pipeline end to end using the machine learning using Azure Designer. इसके अंदर हम drag and drop create करेंगे।
Alright. ठीक है, थैंक यू वलीद। हम लोग फिर 12:45 पे ये लिंक दोबारा से ज्वाइन कर। तैमूर आपके पीछे काफी शोर आ रहा है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तैमूर, ठीक है, हम लोग 12:45 पे इसको दोबारा से ज्वाइन करते हैं लिंक को, और फिर वलीद आपको एक डेमो देंगे इसका जो हम लोगों ने shall we keep login or shall we come out of it? It's totally up to you. Say it again. It's totally up to you if you want to stay logged in or if you want to leave. Yeah, we stay login prefer because. Yeah, or the break for lunch and namaz will probably be done after we finish our demo at around 1:20 या 1:30 तक हमारा demo finish हो जाएगा, और उस time पे we can have a break for lunch and namaz, right? Okay, sir. Fine. Great. Thank you. Thank you.